Neeraj Chopra, Manu Bakar, Sarabjot Singh, Swapnil Kusale, Aman Sarawat and the Indian hockey team contributed to the 6 medals, including a silver and 5 bronze that India won in the Paris 2024 campaign. While the 6 medals gave many reasons to celebrate, India's campaign at the Olympics were also filled with many near misses. Soon after, the Paralympians contributed to their brilliance and continued their brilliance from the Tokyo Games to bring home 29 medals from Paris, India's highest haul yet. This included 5 gold medalists, 2 of whom were defending their Paralympic crowns. What can India take away from these 2 campaigns and learn from in the run-up to the LA Games 2028? That's what we hope to explore in the first panel of the day, Learning from the Paris Games. I request Mr. Y.B. Sarangi, Senior Assistant Editor, The Hindu, who bore witness to India's Olympic campaign in Paris, to introduce our guests and get us started. Yeah, good morning. So the first session is learnings from the Paris Games, which happened last year, and it's in July, August, and so that we can look back and learn a few things from the Paris Games. So I'll call up on stage Mrs. Putul Kumari, Senior Vice President of National Rifle Association of India. Next is Mr. Adil Sumariwala, Vice President, World Athletics. Next is Shiva Kesavan, Head of Scholarship, Olympic Sports Reliance Foundation. He was the Deputy Chef de Mission of Paris Olympics and reputed Winter Olympian. So next is Commodore P.K. Garg, a former CEO of TOPS. So welcome all of you. To start with, I'll ask each one of you to, everyone must have seen the Paris Games on TV or in physically. So could you please sum up your thoughts on the Paris Olympics, basically India's performance, how did India perform in the Paris Games? Mr. Commodore Garg. Thank you very much. I was heading the Target Olympic Podium scheme, which was basically running the Olympic program of the country for the last 3 years. And I would say that our preparation for the Paris Games drew a lot of lessons after Tokyo, because Tokyo was a special Olympics which was in the shadow of COVID, and Paris came after that. So a lot of things which were closed during Tokyo time, that a lot of things were not available. During Paris time, everything was open. So there were far bigger challenges in Paris. Also, it was in Europe, so it was more challenging, definitely. But we had prepared very well for Paris. And if you see the overall performance, yes, we got 1 medal less than Tokyo, but there were 6 fourth place finishes, which were a loss by a whisker. So if they could have converted to medals, we could have come back by 10 to 12 medals also. But
Also in sports like table tennis, first time India went into quarterfinals and semi-finals. So which was again a very, very big step in sports which traditionally don't reach those places. In archery we had 4 quarterfinals, which never happened before. So if you see, the base of the country is expanding. However, I would still say that there is a lot to learn from Paris, and as we go ahead, we will be discussing that, and I will come to that, what are the key learnings and what we should do to increase our medal tally for LA Olympics. Thank you. Yeah, that's a very positive way to start the proceedings. So, Mr. Sumariwala, your thoughts, please. So I think it was a mixed bag. There were some good things that happened, and there were some things that were not very good that happened. And to me, as a sportsman, a medal is a medal. So if you got one medal less, it's not good. Especially with the time, energy, effort, money that the government put behind the Indian team. I mean, I'm also part of the Mission Olympics cell where he was the CEO. And the amount of energy spent, the amount of money that was spent, I think the results were not commensurate to that. And that is my disappointment. I mean, getting 2 medals in shooting, 3 medals, whatever, great show. Neeraj getting a medal when he was injured. He threw 2.5 meters more than his winning throw at Tokyo. I think it was great that in that injured state he could still manage a silver medal. Had he thrown what he threw in Tokyo, he would have come 5th. Did the relay disappoint? Absolutely. The relay just at the World Championships. Though they ran only 0.5 seconds slower. But they disappointed. They could have run 0.5 seconds faster and been in the top 4. Did Sable disappoint? Absolutely. Had he run what he had run earlier, he would have had a medal. So, I think it was a mixed bag. And there are a lot of learnings, like Commodore Garg said. And we can discuss those as we go down the road. But we have to call out that, yes, we got 1 medal less, which is not acceptable, at least to me, as a person sitting on the Mission Olympics cell. Yes, a 4th is a 4th, a medal is a medal. That's the way I look at it. Your thoughts? Yeah, it was quite an interesting experience being at Paris. I was the deputy chef de mission of the team. And I think what was new is that for the first time, both the chef de mission, it was Gagan Narang, and myself, deputy chef, we were both Olympians. So what we could, the impact we could have at the Olympic Village itself, as people who have been through it, who know what the requirements of athletes are, I think we were able to bridge that gap. And for the first time, we had certain initiatives for the athletes, which was never before, like a recovery center of our own at the Olympic Village, branding at our for India at our official residence at the Olympic Village to give that sense of national pride, coordinated effort when you're going out, how you're dressing up as a team, the discipline you're maintaining. We had regular daily interactions with the government, with TOPS, on what is required, and really the government pulled out all the stops. They were all the support staff was sent, whether they are inside the Olympic Village, outside. I know that was not easy to manage, transportation, all of that. At the same time, taking from what the previous 2 speakers said,
for champions. That would be, I think, a way that we can say, okay, we've arrived as a country in the sport. Then beyond the actual sport per se, there was a lot of other things that happened in Paris. There was the India House, which was there for the first time, which was a huge involvement. 40,000 or so Indian fans, interacted. We had a lot of international push for hosting the Olympics in India. So, presentation of our country, the soft diplomacy, building the prestige of our country internationally. So these are all initial steps, and the community needs to be together and promote our country abroad, because that is also one of the ultimate goals of sport. That was really nice. पुतुल मैम, आप शैटर में थी, आपकी बेटी श्रेयसी शूट कर रही थी, एंड पूरे शूटिंग फ्रेटर्निटी के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था. इतने साल का जो मेडल लेस जर्नी वो ख़त्म हुआ, तो आप इसको कैसे देखती हैं? मैं प्रेसिडेंट नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके सुपरविज़न और गाइडेंस के तले शूटर तैयार होते हैं और शूटिंग करते हैं. और अभी तक के इतिहास में शूटिंग का भविष्य बहुत ही उज्जवल रहा है, और शूटिंग ने अकेले सारे स्पोर्ट्स को गौरवान्वित किया है. तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ पर मैं आके आप लोगों के साथ में अपनी बातें शेयर कर रही हूँ. निस्संदेह आप जब बात करते हैं कि हम लोगों ने ओलंपिक से क्या सीखा, क्या देखा हम लोगों ने ओलंपिक में, तो मैं बताती हूँ कि ओलंपिक गेम्स के समय में जो शूटिंग इवेंट थे, शॉटगन शूटिंग रेंजेस थी, वो पेरिस शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर शैटरू नाम की छोटे से कस्बे से में वो कंपटीशन का आयोजन किया गया था, और हम लोग सब वहाँ थे. हम लोगों ने देखा कि वहाँ की जो रेंजेस थी बहुत अच्छी थी, लेकिन दूसरी जो व्यवस्था थी, जो विजिटर्स के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जबकि उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत गर्मी थी, उनके लिए कोई शेड और ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी. लेकिन वहाँ का हर आदमी अपने बच्चे के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में वहाँ उपस्थित था, बिना किसी शिकवा शिकायत के. तो ये जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो एक कल्चर होता है, स्पोर्ट्स का कल्चर, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो हमें सिखाने की ज़रूरत है. हम कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, अगर हम उसको लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है. तो हम कैसे अपने यहाँ के वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसको हम डेवलप करें. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पहले कोई कल्चर नहीं रहा. हमारे यहाँ मल्ल युद्ध, कुश्ती, ये सब हमारे परंपरागत खेल थे, कबड्डी, खो खो, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं दब गई थी. लेकिन हमारे ही देश में हरियाणा राज्य ने उसको सुरक्षित रखा, और उसी के कारण आज सबसे ज़्यादा जो कुश्ती के हैं और बॉक्सिंग के जो बच्चे वहाँ से हरियाणा से जीत कर आते हैं. तो मैं बात कर रही थी कि शैटरू में मैंने देखा कि उन लोगों ने इतने छोटे कस्बे में वर्ल्ड क्लास ओलंपिक के जो मापदंड के अनुसार जिससे जो स्टेडियम बनता है, उस तरह की उन्होंने तैराकी के एक बहुत बड़ा स्टेडियम तैयार किया था, जो आने वाले समय में वहाँ पर तैराकी के खेलों का आयोजन हो सके. तो मैं जो अभी हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि हम स्पोर्ट्स में ऐसे करें कि हर जगह एक अलग इवेंट को हम ऑर्गेनाइज कर सकें, तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक स्टेडियम को एक स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड कर देते हैं, तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होता है. तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर हम लोग इस तरीके से एक सिटी, एक स्पोर्ट्स के रूप में हम लोग इसको डेवलप करें और इसको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाएं, तो आगे हम काफ़ी आगे जा सकते हैं. क्योंकि हमारा हम अभी जो सरकार की पॉलिसी है खेलो इंडिया, वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है. काफ़ी लोग निकल कर आए हैं, और बिहार सरकार में अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी मेडल लाओ नौकरी पाओ, इससे बच्चों में काफ़ी ललक बढ़ी है. क्योंकि हमारा जो पूरा परंपरागत एक सोच थी कि जो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब वाली, तो जो पढ़ेंगे वही नौकरी में जाएंगे, तो इस सोच को कहीं ना कहीं उसने बदला है.
कि हम मेडल ला के भी नौकरी पा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे बिहार में स्पोर्ट्स में काफ़ी संभावनाएं हैं, और जैसे बच्चे एजुकेशन करके ब्यूरोक्रेट्स बन के जो जाते हैं, वैसे ही हमारे काफ़ी बच्चे स्पोर्ट्स में अपकमिंग गेम्स में आने वाले हैं। थैंक यू। ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट निकाला कि स्पोर्ट्स कल्चर क्या, और मैंने भी देखा है कि पेरिस में सुबह शाम लोग जाके भागते हैं, दौड़ते हैं, और फिर अपने फैमिलीज़ को लेके जाते थे देर देर रात तक मैचेस दिखवाने। तो बेसिकली स्पोर्ट्स कल्चर एक ज़रूरी चीज़ है, बट हमारे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इसमें काफ़ी फंडिंग की, काफ़ी बैक किया स्पोर्ट्स पर्सन्स को बिफोर पेरिस। तो कमोडर गर्ग, do you think it can be utilized in a better way, or I mean the funding can be utilized in a better way to get more medals? मैं सब लोग के की नॉलेज के लिए एक बात शेयर करना चाहूँगा कि भारत सरकार की 2 स्कीम्स हैं। एक स्कीम जो है असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, जिसके तहत जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको डायरेक्ट सहायता दी जाती है एथलीट्स को ट्रेन काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट में 350 करोड़ रुपए साल में सरकार सारी नेशनल फेडरेशंस को देती है, जो डायरेक्टली एथलीट्स के ऊपर खर्च होता है। लेकिन 2016 के आसपास टॉप स्कीम जो शुरू की गई थी, उसमें इसलिए शुरू की गई थी कि डायरेक्ट फंडिंग, मान लीजिए आज की तारीख में एथलीट पीवी सिंधु या कोई भी जो कि डायरेक्टली एथलीट को ही फंडिंग दी जाती है। और पिछले ये टोक्यो साइकिल में ऑलमोस्ट ठीक हो गया था, और पिछले 3 साल में इसको और मजबूत बनाया गया। पूरी की पूरी पेरिस साइकिल में डायरेक्ट फंडिंग करीब 75-80 करोड़ की डायरेक्ट फंडिंग एथलीट्स को दी गई, और अब अगली LA साइकिल के लिए इसका और भी विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि इसमें वो खेल जो एशियन गेम्स में हमारे लिए मेडल लाते हैं, जैसे कुछ खेल हैं जो ओलंपिक्स में मेडल जिनमें नहीं लाते हैं लेकिन एशियन गेम्स में मेडल लाते हैं, उन सब खेलों में भी टॉप्स की डायरेक्ट फंडिंग एथलीट्स को जाएगी, जिससे कि चुने हुए एथलीट्स जिनसे हमें मेडल की आकांक्षाएं हैं, वो उनको डायरेक्ट फंडिंग दी जाएगी। तो फंडिंग की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। एथलीट अगर आज की तारीख में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो टॉप्स एक 40-50 लोगों का एक पूरा ग्रुप है जो कंटिन्यूअस रिसर्च करता रहता है कि कौन से प्लेयर्स कितना। तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि मेरे को टॉप्स में लो या मेरे को या किसी फेडरेशन को बोलने की। डायरेक्टली जो हमारी पूरी टीम है वो कंटिन्यूअसली स्पोर्ट्स पर्सन्स का प्रदर्शन देखती रहती है, उनके आंकड़े करती रहती है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से बात करती रहती है, और खिलाड़ियों के कोचेस से भी कंटिन्यूअस आदान प्रदान रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट सिनर्जाइज्ड मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच जो है टॉप्स डायरेक्टली प्लेयर्स को लेती है और उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार फंडिंग करती है। आपको लगता है कि इसमें कोई छोटा मोटा गैप भी हो सकता है जिसको फिक्स करके अकाउंटेबिलिटी का एक क्लॉज लाया जाए सो दैट टू बेटर यूटिलाइजेशन हो सके? हमने अपने मिशन ओलंपिक सेल जो कि इसकी कमेटी है जो फंडिंग देखती है और उनका उसको और ज़्यादा मजबूत किया है अभी, और उसको वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगी। और ये भी देखिए अब हम इसमें स्पोर्ट्स साइंस को और ज़्यादा लाएंगे और उससे उनका मॉनिटरिंग बहुत अच्छा होगा। तो मॉनिटरिंग की जो आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, तो प्रदर्शन ऊपर नीचे होते हुए देखते हुए खिलाड़ियों को रखना है या नहीं रखना है वो देखा जाएगा।
Mr. Sumariwala, you also were quite frank about admitting that there were some performances that are not up to the mark. And AFI, I believe, and you have already spoken, in fact, you spoke to me at some of the events, that AFI is going to do some changes in 2025. So can you just go through what are the changes you are planning and how you are aiming to enhance the performance of our athletes? So I think what needs to be done is you need to fix the ecosystem. Just getting one athlete, one coach is not going to work. You need a whole ecosystem, which is athlete, coach, masseur, physio, dietitian, nutritionist, mental trainer, doctor, etc. What we are doing in Athletic Federation is we are trying to create that ecosystem. So for example, we've just over the last 2 years produced 2,000 plus level 1 coaches. We have got over 250 level 2 coaches. At district level, we have created 10,000 technical officials. Now our officials are at international level. It's very important that you have your officials at international level, especially in events like boxing, wrestling, etc. Otherwise, games will be played and our athletes will lose out. But I think you need, that is what athletics should be. I think the overall structure, also needs to fall in line. We run the largest grassroots level program in the world where 1 million children take part. One of them was held right here in Patna, the inter-district championships, where 600 plus districts came, 6,000 athletes, under 14, under 16. They come with their parents. For 1 week, Bihar government looked after them, fed them, 10,000 people they looked after. Now that is after selecting from each district, so only 13 come here. It has to be an overall strategy. Today, while I'm the same part of the MOC, where one athlete wants 6 support staff. We give them 6 support staff. They go and fail at the Olympics. And who gets blamed? Federation. Why? Why should the federation be blamed? We've given them 6 support staff that they wanted. We've cut quota from other sport and given it to them. That's something what Prakash Padukone said was very right. We've given you everything. You have to go there and perform. We can't perform for you. So if you have to take the blame, the athlete doesn't want to take the blame. Why? Because we spoiled them. We at MOC have completely spoiled them. Whatever they ask for underwear also, we'll give it to them. Because the athlete could do. But if you keep spoiling the athlete gets out of control. The athlete is the most selfish person, because unless he's selfish, he cannot win. Now, the athlete will only look at what he wants, but what is good for him in the overall ecosystem, he doesn't know. He doesn't have the understanding or the experience or the education or the background for it. So there are people like us who are there to help. So I think everybody needs to be part of that system. Secondly, we are working in silos. There is SAI, there is MOC, there is TOPS, there is Federation, there are NGOs, there are sponsors. Everybody thinks they know the best. Everybody is trying to do their own little jig. So we need to work together as one unit. If we don't do that, we will not get results. So is the AFI doing anything different or anything new so that the system can be more robust and we can... So that's exactly what I said. That's what we're doing. We are creating our own coaches. We're not depending on NIS. We're creating our own coaches. We're creating our own technical officials. We are taking support from our sponsors for sports science, because that's a very... Sports is a science. Without biochemistry, without biomechanics, there is no athletics. So we are taking help from our sponsors for that.
So we are doing what we have to do to strengthen the ecosystem. But while we are doing a little bit, I think the overall ecosystem needs to be strengthened at the national level and at the state level. Today the problem is the states and the districts. Now a few states like Bihar, Haryana, Orissa, MP, Tamil Nadu, there are some states which have now started doing work. They have brought in foreign coaches. But unless that happens at grassroots level, unless the base becomes strong, unless you get a foundation, and that you can't sit at the center and do it. Again, sports is a state subject, and the state so far have not been very open into supporting sports. But now I think in the last few years there is a whole mind change, and states have started supporting sport, and I think that's a very good sign. Nice. So, Shiva, you have seen many Winter Olympics and Paris, of course, you were there as Deputy CDM. What do we need to do so that our performance increases in LA 28 and maybe in 2036, where we are aspiring to host the Olympics? Well, first of all, I'd like to agree completely with what Adil said right now. I think that's very good analysis, because the ecosystem really needs, an overall alignment, let's say, in which federations are leading what has to be done in their respective sports, because they know best. They have the expertise, the technical expertise. The government to provide the funding in the way it's been doing, but with better coordination probably with the federations, systemically rather than individually. As a foundation, as a representative of Reliance Foundation, we're very proud of the work that we're doing with Athletics Federation of India in sports science. We are also working very successfully with state governments. And this is something that we would like to explore more in the future, with states that are investing in the facilities and the infrastructure of their state, and then we bring in the science, we bring in the foreign coaches, we bring in the management. We're running a athletic center at Odisha and Bhubaneswar in the JV with the Odisha government, which has been very successful. And such initiatives we would like to take to the next level. From an Olympics organization perspective, I think one of the things that I've noticed in this stint was that the preparation must start a lot earlier. And also there's an organization aspect there, because 2 years before you need to nominate the chef de mission. The chef de mission should already go there, should see what is required. The planning should start, what facilities we want to give to our athletes over there, how all the logistics are going to work, what are the problem areas. So I feel that we are lagging behind in that part, right? Because when we went over there, a lot of permissions were not in place for some of the equipment that SAI wanted to put in there. So the intention was there, but then the homework wasn't done. So, and I feel that, when alignment is there from the apex organizations, these problems will be taken care of, However, the future of sport, I think, is the states in India. It is very much a sports subject. Each state has its own unique ecosystem for sports, what needs to be focused on in that particular state. It's a smaller piece of the overall pie that you have to deal with, rather than looking at a country like India, in overall format. I'll give you an example of winter sports. Central government has no policy for winter sports. But some states, winter sports is the main, activity that youth are engaged in. And it attracts tourism, I believe. It attracts tourism. There are border areas, there are underdeveloped areas. Sports for development is a huge thing. This is a massive industry which can generate revenue, not just tourism, but the sport. So the point is that there are unique circumstances in each state, and it's great to see states like Bihar now, there's a lot of buzz about what is happening in Bihar, and how this is we're going to see a rapid, rapid shift in what kind of
results the athletes are bringing in. I'm sure of that, and we are happy to be part of this. मैम शूटिंग ने इतना अच्छा किया इस बार, तो ऑब्वियसली जब 28 और 32, 36 की बात आती है तो ऑब्वियसली शूटर्स को पहले प्रायोरिटी में देखा जाएगा कि ये हमको ज़्यादा मेडल देंगे, और वहाँ पे ज़्यादा मेडल भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि NRAI राइट डायरेक्शन में है, और क्या फ्यूचर का आपको कैसे दिख रहा है? मुझे स्पोर्ट्स का फ्यूचर, जैसा कि मेरे साथी पैनलिस्ट ने कहा कि सेफ लगता है, लेकिन मैं उनकी बात से एग्री नहीं करती हूँ। मुझे स्पोर्ट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है आने वाले समय में। मैं लगभग 30 सालों से मैंने शूटिंग को, फेडरेशन को नज़दीक से देखा है, तो मैं ये जानती हूँ कि पहले के समय में, आज से आदिल जी भी जान रहे होंगे कि आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट के पास में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। हमारे शूटर्स को इंपोर्ट कार्टेज के लिए, कारतूस के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। 6-6 महीने हमारे शूटर्स के पास में कारतूस नहीं होते थे। किसी के पास होता था तो जाके लोग 500 गोलियां मांग के लाते थे, फिर चलाते थे। और उस समय चाइना के शूटर को बाल्टी में भरकर गोलियां मिलती थी और दिन में वो 200 राउंड फायरिंग करते थे। हमारे शूटर्स के पास में 50 गोलियों का भी कोटा नहीं था। फिर धीरे धीरे पॉलिसीज़ में बदलाव आया। मेरे पति दिग्विजय सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे। उन्होंने अपने गवर्नमेंट में कुछ जाकर इनोवेटिंग आइडिया दिया, उसके कारण बदलाव आए और हमारे पास अब शूटर्स के पास में गोलियों का अभाव नहीं होता है। उनके पास इंपोर्ट लाइसेंस होता है, वो वेपन मंगा सकते हैं और कार्टिजेस मंगा सकते हैं और जितना चाहे, जितनी राउंड चाहे जाके चला सकते हैं। आज की स्थिति ये है। तो मैंने शूटिंग को कहाँ से कहाँ तक आते हुए देखा है, तो मुझे पता है कि आने वाले समय में हमारी शूटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैंने राज्यवर्धन सिंह राठौर को एथेंस ओलंपिक्स में देखा जब वो सिल्वर मेडल पर निशाना साध रहे थे। मैंने अभिनव बिंद्रा को देखा जब वो गोल्ड पर निशाना साध रहे थे। और उस समय से हमें लगता है कि और आज का जो सफ़र, हम 3 मेडल के साथ यहाँ बैठे हैं, तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिहार में अकेले एक जमुई जिले ने 2 ओलंपिक्स में भेजे हैं, एक ओलंपिक्स और एक पैरा ओलंपिक्स। दोनों बच्चे हमारे जमुई से थे। तो हमारे आने वाला कल हमारा बहुत ब्राइट है। लेकिन मैं अभी बात हो रही थी कि जो डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में अलाइनमेंट की, तो मेरा कहना ये है कि जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार होगा, आप लोगों को उस कल्चर के साथ में जोड़कर बच्चों को आप भेजोगे और बच्चे जब आपके तैयार होंगे, उस लेवल पर आएंगे, तो आप उनको तकनीकी सहायता देंगे। लेकिन मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो हमारी तीरंदाज थी झारखंड से की रहने वाली, उनके पास सहूलियतों का अभाव था और उतना अच्छा नहीं कर पाई। तो हमारे इस तरह के बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर आने के पहले ही वो नीचे रुक जाते हैं, क्योंकि उनको नीचे से कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आप एक जगह पर आ जाते हो तो आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलता है, सरकारी सुविधाएं मिलती है, कोचेज़ मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके वहाँ तक आने के लिए, लेकिन उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। वहाँ तक आने के लिए भी हमें कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो गांव से बच्चों को, प्रतिभा संपन्न बच्चों को निकाल कर लाए, उनको सहायता दे, उनको आर्थिक सहायता दे, तकनीकी सहायता दे, कोचेज़ उपलब्ध कराए, ताकि वो एक लेवल पर आए, ताकि वो नेशनल गेम्स के साथ में जुड़ सके। नेशनल गेम्स के साथ जाने के बाद ही इंटरनेशनल के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो आपका जो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल पर आप स्पोर्ट्स के लिए आप क्या कर रहे हो, आप ये भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो हम प्राइमरी लेवल में, जो ग्राम पंचायत लेवल पर गांव के बच्चों को लेकर आगे आने में हम लोग को सहायता प्रदान कर सके। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। मैं परसों भोपाल गई थी। भोपाल में एक वहाँ पर शूटिंग का उद्घाटन हो रहा था, तो मुझे बताया गया कि भोपाल में आने वाले ओलंपिक्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा स्टेडियम, 10,000 एकड़ में वो स्टेडियम का निर्माण हो रहा है।
और एशिया का सबसे बड़ा इक्वेस्टेरियन के लिए वहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो मैं सोचती हूँ, और एक चीज़ मैं और भी बताना चाहती हूँ कि जब आज से 15-20 साल पहले हमारी जो शूटिंग होती थी, तो हमारा जो गेम होता है, मैं ट्रैप और स्किट गेम की बात कर रही हूँ, तो हमारे 5 स्टेशन होते हैं, 5 स्टेशन होते हैं और लेकिन हम शूटर रखते हैं 6, ताकि रोटेशन में आता रहे बच्चा, तो हमारा कोई स्टेशन खाली नहीं रहे। लेकिन हमारे पास 5-6 बच्चे नहीं होते थे, हमें फील्डर्स रखने पड़ते थे ताकि वो हमारी शूटिंग टीम का रोटेशन बना रहे। और आज जब भोपाल की जो शूटिंग एकेडमी है, उसके कारण जो शूटिंग में बच्चे तैयार हुए हैं, आज हमारे पास जब नेशनल गेम्स होते हैं, दूसरे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो हमारे पास 180, 200, 250 एंट्रीज आती हैं लड़कियों की। लड़कों की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। लड़कियों की इतनी एंट्री आती है कि हम हैरान हो जाते हैं कि कहाँ हमारे पास 6 शूटर नहीं होते थे, आज हमारे पास 150 लड़कियाँ आ रही हैं। तो आप इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार करेंगे, बच्चे अपने आप आएंगे। केवल उनको प्राइमरी स्टेज पर उनको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, तो सरकार को इसमें काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया। जबकि हम 36 ओलंपिक्स का सोच रहे हैं कि बच्चों को ग्रूम करने का, तो कमोडर गर्ग, हम अभी 11 साल बचे हैं 36 के लिए। अगर हम मान के चले कि इंडिया बीट कर रही है और हमें मिल रहा है गेम्स, तो अभी से क्या करना होगा सो दैट हम एक सम्मानजनक मेडल टैली में हमारा स्थान रहे 36 में? देखिए, मेरे को लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भारत में जिसकी कमी है वो है कोच एजुकेशन। हमारे यहाँ कोचेस बहुत कम हैं, हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से, और कोच एजुकेशन बहुत थोड़ी जगहों में ही प्रदान की जाती है। एंड क्वालिटी कोच एजुकेशन इज़ गिवन इन वेरी लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस. You would be surprised to know that we were one of the first to start coach education in NIS Patiala in 1960. But no more institutions were developed. In United Kingdom, the coach education started in 1980s, and today more than 60 universities over there have 4 years degree course at the bachelor's level and 2 to 3 years master course at master's level. So that is the transformation in those countries, and that's why they have risen to the state where they are today. So what we need is, first and foremost, is expand coach education with quality coach education institutions. The base has to really become big, where people take pride in becoming sports coaches. Secondly, we have to do talent search. क्या हर स्पोर्ट की अपनी एक हाई परफॉर्मेंस एज होती है. किसी स्पोर्ट में वो 20 साल पे आती है, किसी में वो 24 साल पे आती है. तो उन बच्चों को आप आज से ही we have to start this process of finding those talented children in various sports. और हमको ये भी देखना है कि किन स्पोर्ट्स में हमारी मतलब where we are strong in which sports. ऐसी ज़रूरत नहीं है कि रेसलिंग में वी आर वेरी गुड, सो वी गो फॉर ऑल 20 weight categories in wrestling. We should select that we are good in these 8 weight categories. So we can concentrate on those 8 to 10 weight categories. Similarly in boxing, similarly in athletics, there are 48 events. We can concentrate on 10, 15, whatever, where our strength lies. So concentrate on those and start training. Thirdly, we need the high performance sport is a complete circle with a high performance director in the center, coaches, sports science, money, everything along with it. So we have to start that culture of high performance director in each national federation and the whole team around it. So these, and fourth is selection policies. We have to have very strong and transparent and clear selection policies right from the beginning, so that athlete is not confused कि मेरे को ओलंपिक्स के 3 साल पहले ये करना है, 2 साल पहले ये करना है और 1 साल पहले ये करना है. तो ये बहुत ज़रूरी है.
कुछ फेडरेशंस ने बहुत अच्छी सिलेक्शन पॉलिसी बनाई है और उसका फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट मेन है। और स्पोर्ट्स साइंस, जिसको कि इंडिया में हम बहुत ज़्यादा लिप सर्विस करते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ हम सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं। वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड इवन 5% ऑफ स्पोर्ट्स साइंस विच वी नीड टू रियली गो इन टू इट। आप चाहे जितने टैलेंटेड हों, अगर साइंस नहीं लाएंगे तो वो ओलंपिक के पोडियम पे खड़ा होना नामुमकिन है, आपको वो लाना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें कीजिए और अपने आप आपके मेडल बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। Mr. Sumariwala, so what do you prescribe, especially when we are talking about athletics, and Neeraj has shown that we can do it. So in the next 10-12 years, how can we medal more? So there are couple of things. It's just not one thing or two things. I think, again, like I said, it's all part of an ecosystem, and there are a couple of things. And there was a thought process for a very long time that all federations are bad. All federations should be shut down. NGOs, government, etc. should run them. My issue is absolutely the opposite. There are good federations and there are not so good federations, and I accept that. I openly accept that. But having said that, my view is you strengthen the federation, because federation is the only person who can send your entry to the Olympic Games, to the Asian Games, to the Commonwealth Games, or any international forum. So by trying to throttle the federation, it's not going to help. And I'm very pleased that 3 days ago the Honorable Minister set out a vision plan. And the Honorable Sports Minister, Mr. Mansukh Mandavia, very clearly put on a screen saying that this is what government will do, this is what federations will do, this is what state governments will do, this is what corporate will do, this is what NGOs will do. So it very clearly defined, which has never done before, and we are very pleased to hear. Good governance, non-negotiable. If you want to win medals, federations will have to fall in line with good governance and professionalism. And the new sports bill, and I'm very pleased to say that the new sports bill, people have made a lot of comments, nothing is perfect. But I think it's the first step to good governance, and I think we should all embrace the new sports bill. Secondly, like I said earlier, then coordination between all the stakeholders. Thirdly, this whole thing before the Olympics starts, and every conference which I have attended or conclave, how many medals will we get? How many medals will we? I've never answered that question. You've also asked me, I've never answered that question. Why are you putting pressure on the athletes? Our media, because they have pages to cover, they have nothing else to write because they don't do enough research. That's all they want to know, how many medals will you get? And because of that, you keep putting undue pressure on the athletes. The next thing you need to do is we need to sort out our IOA issues that we see in the papers every day and every second day. Unless we sort this out, getting the Olympic Games or winning medals is only going to be a pipe dream. You see, for example, what happened in Paris. You took, I think, one of the best doctors you had with a support team, medical team, but the equipment was left in India. The equipment never reached there. Now, the leadership that went there, what was their experience? Were they leadership team at Asian Games before that, or Commonwealth Games, or international federations, or anything of the sort? No. I mean, these guys did a great job, they fought hard. But did they have the requisite experience? No. How was the selection done? Nobody knows. Nobody knows. People whose names are not on the list have gone to the, not even on the government list, have gone to the games.
People who are not accredited got accreditation cards. Now this has to be resolved internally. That's our internal problem. We need to resolve it. Again, we are already late preparing for LA. We have already wasted 6-8 months and nothing concrete has happened. By now we should have the coaches. By now we need to have the support staff. We need to have the doctors in place, physios in place, because these guys have to work through to LA. We wake up 1 year before and say, give them everything, give them everything, give them everything. It's of no use. It is now that you have to give them everything, not 1 year before the games. And I think we need to do, when we come back from the games, within 15 days, we should do an honest debrief. This whole euphoria, we got 6, but we got another 6 fourth places, and this whole, no. Let's do an honest debrief that these were the good things that happened, and these were not some good things that happened. And how do you correct them and correct them today? We've already wasted 6 months and not done anything about it. There is no white paper on what happened at the Olympic Games. So unless you do that, it's not going to work. Some of the other points I have, I've already talked about getting referees and people on international bodies. That is most important for us. He talked about coaches, I completely agree. The issue is the people who come into sports coaching in India don't have a science background. And we are trying our best to do that. And Athletics Federation has a vision of producing 40,000 level 1 world athletics certified coaches by 36. States must do their bit, because at grassroots level there is nobody in the nationals or federation that can do. So only state government, state associations and district associations. And therefore states must be given a right on the Olympic Committee, on the Indian Olympic Association, because they are the base of all sports. And the other thing we've always noticed, those who win medals, and they get everything. What about those who fought hard, who have not got medals, who just missed? They are going to again compete next. But you've pushed them down, they're already low. Mentally they're already low because they've lost. They're 4th or 5th or 6th. But nobody looks at them. You want those 6 medalists on the stage, the rest of them who fought hard, given the blood, sweat and tears, you don't look at them. I think we need to figure out, so I've just given you a general, and I can go into details on each of them, will take 3 hours each, but I'm just giving you a general sort of overview. Thank you. So we are really running out of time. So Shiva, your quick thought, and we'll open the floor for questions. I'll try to be quick, solve all the problems instantly. But no, I mean, most of the good points are already said. Empower, strengthen the federations. Everything has to go through the federations. Government should have a role of funding, of ensuring good governance in those federations, absolutely. Ensuring accountability and transparency in the federations, that's the government roles, but not in the functioning. IOA, it's a huge issue, because unless this mess gets sorted out, I don't see the Olympics coming to India, because that's our base credibility. And again, we need to empower that organization, which is made again of state federations and of national sports federations. We need to have more strategic thinking in terms of which sports are we going to bet on. Athletics, we know that has so many medals. Swimming also has so many medals, aquatics in general, although there are its own complications there. Urban sports, so many of our population is in urban cities. We're doing nothing in urban sports. Sports where there's less competition internationally, new sports. Why aren't we getting on the bandwagon first? Squash is a good example. We have good potential over there. Luckily, cricket is there. From next time onwards. So that's an advantage for us. So strategic thinking, but in general, the alignment and the clear distinction of roles. What the state government should do, what the central government should do,
recognize that sport has its autonomy in this whole system, and there shouldn't be political interference in sport, and what the corporates, foundations, others, what role they play in this whole thing. I think to sum it up briefly, that's what I would comment. Lovely. So do we have time for maybe 2-3 questions? Yeah. Please go ahead. Sir. Yeah. Thank you to all the panelists. It was really interesting, and so many points have come out. My question is based on my visit to Paris Olympics. The government of Bihar was kind enough to send me and one more officer, Mahinder, as an observer to go and observe Paris Olympics and to come back and try to implement what we have observed. And since Adil ji has mentioned that white paper has not yet been submitted, but in front of everybody I would like to say that we have submitted our report about our learnings from Paris Olympics, and we have given it to Ministry of Youth Affairs and to all the federations and to the government. From that I wanted to ask 2 questions. The question is open to everybody, not only to the panelists. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर लोगों से कि सर ओलंपिक का मेडल्स का टैली आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है यूनिवर्सिटी गेम्स में जो देश ने कॉन्सेंट्रेट किया वो देश मेडल टैली में आगे है. सिर्फ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैं बात करूंगा 11 गोल्ड मेडल है. कहाँ चला गया हमारा यूनिवर्सिटी गेम्स? हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं यूनिवर्सिटी गेम्स पर. जिस वक्त आदिल सुमारी वाला खेल रहे थे, जिस वक्त हम दौड़ रहे थे, यूनिवर्सिटी गेम्स का जो इम्पोर्टेंस था आज कहाँ चला गया? क्यों हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं? अनलेस एंड अनटिल हम हर एक यूनिवर्सिटी को एक गेम अडॉप्ट करने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम पेरिस ओलंपिक्स. यूनिवर्सिटी में जो भी खेला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, दे वर द रिपीटेटिव मेडल विनर्स इन ओलंपिक्स. दैट इज वन. नंबर 2, 4 साल में एक बार ओलंपिक्स आता है. क्रिकेटर्स को हर दिन इंटरनेशनल मैच है, आईपीएल फलाना ये वो ऑल. सो दे आर यूज्ड टू द क्राउड प्रेशर. इवन लास्ट बॉल में सिक्सर मारना तो मार ही लेता है, लास्ट बॉल में विकेट लेना तो ले ही लेते. दे आर यूज्ड टू द क्राउड प्रेशर. बेचारा हमारा एथलीट है, 4 साल में एक बार ओलंपिक्स जा रहा है. हम अपने आंखों से देखें सर, बिकॉज आई वॉज थैंक्स टू ऑल द फेडरेशन हु हेल्प मी इन टू गेटिंग इन टू ऑल द स्टेडियम्स वेयर एवर इंडियन टीम पार्टिसिपेटेड एंड स्पेशली एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया. सो जब भी फॉरेन एथलीट्स को मैं देखता हूँ, दे कम एंड एंजॉय. वेन एवर दे कम इन टू द स्टेडियम दे एंजॉय द मोमेंट. डांस करता है, एकदम चीयर करता है क्राउड का. जब भी मैं अपना आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट टू ऑल माई इंडियन ओलंपियंस, बट वेन एवर आई सॉ देम ऑन ग्राउंड, वेन एवर दे एंटर्ड द स्टेडियम, मुंह लटका के अंदर आते हैं, कभी चीयर भी नहीं करते, एकदम चेहरा पर डर दिखता है सर. तो इसको कैसे आप लोग एड्रेस करने वाले हैं? वन इज हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल द मैच प्रेशर, द ओलंपिक प्रेशर? 4 साल में एक बार उनको हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं. पहले से हम क्या ध्यान देंगे और यूनिवर्सिटी गेम्स पर हमको क्या करना है? थैंक यू. एनीबडी? Sir, first, you're absolutely right on university, AIU and school games nationals. School games have failed India. This is what we discussed even 3 days ago with the Honorable Minister, that we need to revamp both the AIU. By the way, just to let you know that Athletics Federation of India has suspended AIU. We have suspended AIU for badly conducting the university games. So there is a problem and we are fixing it. On the pressure, let me tell you that till Neeraj got a medal, nobody even thought that they could get a medal. Everybody was very happy कि भाई हमारा नाम ओलंपिक्स में आ गया, हम ओलंपियन बन गए.
It's only after Neeraj got a medal, at least they have some this thing. Ki Neeraj is like us, he stays with us, he eats with us, he trains in the same ground, he sleeps in the same hostel. So hum bhi kar sakte hai. This is only step one. Step two, we are sending athletes for international competitions to Diamond League, etc., where there is crowd. But more needs to be done. They need to go for more competitions, which we have always encouraged. And we keep going to tops and saying, boss, inko ye competition mein bhi bhej do, wo competition mein bhi bhej do. You're right, it will take a little more time, but I think we've turned the page. And it's a matter of time when our athletes will be also shouting, screaming, and behaving like dadas on the track. Putul ma'am wants to chip in. You see, as far as the competitions is concerned, I don't think our athletes had any dearth of competitions. Each badminton player who was representing India at the Olympics had gone through at least 18 to 20 competitions in a year. And if you know the badminton this thing, there are 5 competitions in a year which are of 1,000 pointers. There are about 5, 6, 7 of them 750, many 500 and many 300, right? So all our top players had already played all those. In fact, last week there was a 1,000 pointer in Malaysia followed by 750 pointer in India. So our players had no match practice or match fear at all. Yes, the pressure of performance in India is too much. I agree there, because still we are getting very less number of medals. So the pressure of performance becomes that much more on athletes. Yes, they should be happier when they are going. If you saw so many athletes coming out of the athletic stadium, they wore lipsticks and they had hairstyles and all that. I also spoke to some of our athletes and told them that you should also come out, you know, full. Some of them did. If you had seen, I will not take names, but some of them did. And there is a big change. You know, I have gone to 5 Asian Games and I have seen athletes walking in the Asian Games villages. Over the years, the chal, jise bolte na, the walk has really changed of our athletes also. But it's a slow change. Yes, it will come. And some of the players told me that क्वार्टर फाइनल से ऊपर हम कभी गए नहीं थे, तो जब हमने सेमीफाइनल खेलना था तो उसकी आदत नहीं थी, you know. So that will come. That will come. I assure you, it will come. And there is one thing, please be assured, there is no dearth of match practice in any top sport today. Each of the competitors have taken part in number of international big ticket competitions. मुझे आपका सवाल अच्छा लगा. आप यूनिवर्सिटी को डेडिकेटेड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा इसके आगे एक सवाल और भी आता है. यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आते हैं वो स्कूलों से आते हैं. स्कूल में हमारे पास हम कौन से गेम को आगे बढ़ा रहे हैं, या हमारे सिलेबस में या हमारे स्कूल कितने गेम को आगे प्रमोट कर रहे हैं. हम सब लोगों ने देखा है कि जब हम लोग स्कूल में खेलते थे, पढ़ते थे, तो हमारा एक दिन पूरा स्पोर्ट्स डे होता था. उस दिन पीटी शूज़ पहन के आने होते थे, खेलते थे. वो उस समय गाँव पीटी, खो खो, इस तरह के भी खेल खिलाए जाते थे. लेकिन अभी तो स्कूलों में कोई स्पोर्ट्स का कोई कार्यक्रम नहीं है. स्पोर्ट्स के लिए कोई डे नहीं रखा गया है. पूरे दिन बच्चे किताबें पढ़ते रहते हैं और घर आकर वीडियो गेम खेलते रहते हैं. इस तरह के कल्चर में आप कैसे कहेंगे कि आप निकल के यूनिवर्सिटी गेम्स में आ जाएं और यूनिवर्सिटी में बच्चे अच्छा करने लग जाएं? सडनली आप इतना चेंज कैसे ला सकते हैं? देखिए, जो मैं कह रही थी वो कि कल्चर, यही होता है कल्चर. जब हम अपने आप को खेलों से जोड़ते हैं, जैसे बिहार में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो कोई गेम्स नहीं हो रहे थे. अब अभी नालंदा में इतना वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना तो भी हमारे यहाँ हॉकी मैचेस खेले गए और हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, जीता. तो आप सुविधा तो देंगे, लेकिन बच्चों को जो इनिशियली प्राइमरी स्टेज से उनके स्पोर्ट्स से खेल से जुड़ने की जो आदत है, उस आदत को जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स की बात कैसे करेंगे? और जहाँ तक मैं देख रही हूँ
कि स्पोर्ट्स की ओलंपिक्स की टैली में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, लेकिन हाँ हमारे पास समय है। अगर हम पूरे डेडिकेशन के साथ में, टाइम बाउंडिंग के साथ में अगर हम इस तरह का प्रोग्राम हम एक ऐड करें कि हम 1 साल में इतने स्टेडियम बनाएंगे, 1 साल में हम ऐसे प्राइमरी बच्चों को एजुकेट करेंगे, इस तरह से ऐसे प्रोग्राम करेंगे, तो फिर हम उस टैली में पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी से बच्चों को हम ले आए और बच्चे हमारे परफॉर्म करने लगे तो ये मुश्किल है। और यही कारण है कि जब बच्चे हमारे जब हमारे एथलीट जब वहाँ जाते हैं तो बहुत टेंशन में होते हैं। मैंने देखा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैंने देखा है वो एक रात पहले से ही टेंशन में आ जाते हैं और दूसरे दिन वो नाचते कूदते नहीं जाते हैं, जबकि बाहर में वो पूरे साल खेलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शूटिंग में पूरे साल हमारे यहाँ शूटिंग होती रहती है। हमारे 4 वर्ल्ड कप होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, और हमारे बच्चे लगातार उनमें जाते रहते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसीलिए हमारे बच्चों को का जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम होता है। थैंक यू मैम। उधर से सिग्नल मिल गया है कि टाइम बहुत पहले। Can I make a quick comment on this? Because it's an important question, I think. So at Reliance Foundation, when we are supporting athletes, our approach is humans first, athletes second. All right. So it's important that we are creating well-rounded individuals, that they are making the full use of sport. When they're going out, they're getting information which they bring back to the country and empowering their communities. This is very, very important because they need to be confident that they can make a livelihood and it doesn't depend on this field of play. They can be successful elsewhere as well. When there's so much riding in sport, when your life can be made or broken because of your result in that particular race, then all your focus will be there. So just a small point to add to the excellent points that other speakers have brought up. Thank you. Yeah, so that was kind of healthy and very honest session. So we are really out of time, and so we have to close this session here. Thank you all the panelists for your inputs. Thank you so much. Thank you all for an insightful session on what is needed to take a bigger step forward. I request Mr. Sarangi to please present our guests with a token of our appreciation. साइंस दोनों को जोड़ दिया।